तत्त्वं श्रीमद्भागवतस्य दर्शयामास जीवेभ्यः तं श्रीजी प्रभु भजे। आज का पुण्य दिवस, Today's auspicious occasion, प्रभुपाद का आविर्भाव तिरोभाव दिवस, the appearance and disappearance day of Sri Jiva Goswami, बोल चुके हैं उनके and already many scholars have उनकी glorified him, his importance, हमारे his लिए writings. अवदान वो छोड़ कर गए हैं, It's a जिससे हम great अपने जीवन को heritage that he has left for us so that we can make our life successful. और बाकी जितने भी योनियां हैं, Human form of life and the other species, the main difference between them is of व्यक्त रूप से बात कर language. सकते हैं और बाकी We can पशु पक्षी भी speak वार्तालाप करते हैं, ऐसा नहीं कि in वो very नहीं clear way. It is not that animals, birds, they do not communicate. They do, but very less. रिसर्च की है। Recently, a big research was conducted in America. It was found that crows, they communicate a lot among themselves, and they also make fun of human beings. और नहीं है, They communicate that this human being is अगर कोई foolish. भोजन देता है तो दूसरों को बता देते हैं It कि was a big research. And if somebody feeds them, they communicate that this is the right person. And if somebody does not उनकी भाषा give food, then they communicate he is a bad person. But their communication is very limited. आहार निद्रा भय मैथुनम से समान Language is very limited. So they cannot make their life successful with that. They can only use that for eating, sleeping, mating, defending. को भाषा से प्राप्त होता है। So a human being has knowledge and he gets knowledge through language. शब्द ब्रह्म परब्रह्म उभौ Bhagavan himself says कि मेरे दो तनु हैं, that I have मेरी दो two forms शब्द ब्रह्म or two bodies. One is Shabda Brahma, one is Param Brahma, two Shaktis. परब्रह्म अधिगच्छति। शब्द ब्रह्म को जानकर ही हम परब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। By knowing Shabda Brahma only can we attain the Parabrahma. हमारी जो इंद्रियां हैं, Why? Because our senses, the external senses, the Gyanendriyas, the Karmendriyas, they are very limited. And because they are material, we can only attain material knowledge through them. And what is beyond the gunas, what is not material, we get the knowledge of that only through Shabda. Shabda is the only praman in that. That is why ज्ञापकम शास्त्रम कि शास्त्र हमको वो that's why Shastra is known as that which gives us knowledge of something that we cannot get from elsewhere. कि जो ज्ञान आपको Veda और प्रकार से प्राप्त means नहीं हो सकता है, the knowledge that we cannot get from anywhere else. That is what Shastra teaches us. We are different from the body. We are Atma. और किसी प्रमाण से Except Shabda Praman, we cannot understand this through any other Praman. जो भारत का शब्द And that Shabda Praman also, especially the Shabda Praman in our country, India, like in say in Christianity or Islam, what do you know about, how much do you know about Atma there? जो वेद को नहीं मानता, And what about Buddhism? They don't even accept. It was in India only. So one who does not accept this Vedas, the Shastra, cannot attain spiritual knowledge. And without spiritual knowledge, what is your life? Eating, sleeping, तो इसलिए nothing more than that. महत्व है। That's why Shabda is very important. And Shabda means Vyakaran, तो जो what we generally call as grammar. हैं पद वाक्य प्रमाण पारावार So, कि ये पद शास्त्र को वाक्य शास्त्र को प्रमाण शास्त्र scholar means one who knows Pada Shastra, Praman Shastra, आजकल तो that is Vidwan. कोई थोड़ा बहुत बोलना सीख जाए, Nowadays, even if somebody knows little, even 10-year-old kids are giving kathas on Bhagavatam, and they are given कमल पता नहीं क्या क्या degrees like Bhagavat Vidushi, Bhagavat Acharya, etc. अध्ययन नहीं किया है। So one who has not studied Vyakaran, how can he understand Bhagavatam? भागवत में तो कहते हैं ना कि आपकी विद्वत्ता की परीक्षा ही It is said that the test of your scholarship is through your knowledge of के Bhagavatam. लिए आपको व्याकरण But in order to understand that, knowledge of Vyakaran is essential. कहावत है ना कि यद्यपि बहुना धी से So- पठपुत्र व्याकरण So it is स्वजनो माँ भूत सकलम सकलम सकृत सकृत
कि अगर आप ज्यादा भी It नहीं is commonly said that even if you don't study too much, पुस्तकालय हमारे like you can see, in our library we have such a huge collection दर्शन है, of चार वेद हैं, चार shastras, वेदांग हैं, 6 darshanas, 4 वेदांग Vedas, हैं, then वेद हैं, Vedangas, फिर then पुराण हैं, Upaved, संहिताएं then हैं, Puran, तंत्र Samhita, हैं, आगम हैं, Tantra, क्या क्या है Agama, पढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। such a huge लेकिन collection. कम It से is कम व्याकरण endless. पढ़ रहे हैं But तो उससे at भी least, आपका even जीवन if you बदलेगा, learn क्योंकि ये Vyakaran, व्याकरण your जो life will संस्कृत जो change by व्याकरण है that. केवल व्याकरण Because ही this नहीं है, Sanskrit Vyakaran ये कोई is ग्रामर not just नहीं है, Vyakaran. ये भी एक It दर्शन is है। not actually grammar, it is a और इसके philosophy, it's a उच्चारण darshan करने in से शब्द itself. को आप सही उच्चारण And करते हो तो पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं तो उससे if भी you आपको पुण्य pronounce a मिलता है। word correctly, ये in बड़ी Patanjali आश्चर्य की बात Mahabhashya, है। he says that अगर you आप get संस्कृत punya शब्दों का ठीक से through उच्चारण that करते हैं also. उससे भी पुण्य मिलता है। Even by क्यों मिलता है reciting पुण्य? Sanskrit क्योंकि words पुण्य क्या होता है properly, जो आपको you बनाती, get punya. जो आपको शुद्ध करता है, What is संस्कृत है punya? That is, it is जो that आपके which चित्त को शुद्ध purifies you. करता है। और जिस चित्त शुद्ध होने का मतलब जिससे And आपके the chitta मन में getting अच्छे विचार purified आते हैं। means you get तो ये इस पर good भी एक बहुत desires in the स्टडी इस mind. समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चल रही है। So currently ये a big शब्द का study is हमारे going ऊपर on in क्या Harvard प्रभाव पड़ रहा है। University regarding what is the और impact of जापान sound में on एक us. बहुत बड़ा In वैज्ञानिक Japan, हुआ था, there उसने was ये a सिद्ध great करके दिखाया scientist पानी who के ऊपर। proved the हमारे यहाँ effect of कहते हैं sound ना कि on इसका आपका water. तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। You बोलते may हैं ना ऐसे? have heard some क्योंकि people, पानी they के say अंदर that बहुत I शक्ति won't जाती even है drink the water from his hand. जो हम दूसरे So के हाथ का why? इसका हाथ का Because a खाना lot नहीं of खाएंगे, इसके energy साथ goes in ऐसा नहीं water. करेंगे, क्योंकि खाने में सबसे When ज्यादा चीज people तो say पानी that I होता है। don't want to तो eat हमारे जो or संस्कार हैं, हमारे with जो this भाव person or हैं, that person, वो पानी में so चले our जाते हैं। samskaras, our और ये उन्होंने सिद्ध bhavas, करके दिखाया, they उसने सामने enter पानी रखा water, and और he फिर पानी proved के पास जो he अच्छे kept अच्छे उसको water in शब्द front बोले of तो him, उसके जो क्रिस्टल and है ना वो when he बहुत बढ़िया spoke तरीके nice से ऑर्गेनाइज हो गए। words, then the फोटो देके crystals दिखाया और got पानी को फिर छोड़े, organized आप in a शब्द nice बोले way, तो and बड़ा when he सरल से spoke दिखा। wrong words, और then हमारा the शरीर crystals जो were है वो appearing to be 70% scattered, तो जल ही है, and तो our उसका इतना body प्रभाव पड़ता है। mainly has तो मैं water. क्यों बता रहा हूँ इस बात को So कि जब this हम is, शब्द there का is so much उच्चारण impact करते of हैं sound on us. तो वो So why I उच्चारण am telling हमें this, when we पवित्र करता है pronounce अगर वो शब्द words, उच्चारण आपने ठीक that से किया है, pronunciation, और that recitation can दूसरों purify को भी us सिद्ध if we करता do है। it properly, and it purifies तो others इसलिए also. संस्कृत का महत्व That केवल is उतना ही why नहीं है, एक the ये बहुत importance of सूक्ष्म महत्व Sanskrit भी है। is not just limited और to हमारे यहाँ तो that. हमारे आचार्य श्री This मध्वाचार्य जी this ने is the कहा कि हर subtle एक importance, what I अक्षर का said. ये अर्थ And Shri विष्णु है। Madhvacharya, he says that सहस्रनाम every के word नाम actually का means 100 अर्थ Vishnu. किया उन्होंने In Sahasranam, he has given मध्वाचार्य जी। 100 meanings of one word तो सबका Nam. अर्थ भगवान ही है, लेकिन उसको ठीक से So उच्चारण the करो, meaning of नहीं every तो word is Bhagavan only, provided स्वर तो you अपराध pronounce वर्तते it correctly. यथा इंद्र शत्रु, अगर स्वर का भी एक थोड़ा अपराध हो जाए तो उसका अर्थ Otherwise, का अनर्थ हो if जाता है। you do तो कम aparadha से of कम a व्याकरण को swara हर एक व्यक्ति also, को पढ़ना then it will चाहिए। be a big problem. और So लोग ये बात बोलते at हैं कि least संस्कृत everyone पढ़ने should से क्या learn होगा, Vyakaran. And संस्कृत then पढ़ के people हमको क्या say, मिलेगा, what is the मतलब use उनका of मतलब learning ये कि हमको Sanskrit? पैसा नहीं What shall I मिलेगा। get out of it? So they think उनका कहने that का मतलब we ये है will कि not be able संस्कृत to earn मिलने से, money by learning संस्कृत अगर नहीं Sanskrit. पढ़ेंगे Their तो point is उनको that पैसा नहीं if मिलेगा। we do not study Sanskrit, प्रश्न we उनका will यही not है। be able to earn money. आजकल विद्या This उसी को is their बोलते हैं जिससे आपको question. पैसा मिलेगा, यानी Point. कि आजकल जितनी Nowadays, भी आप knowledge विद्या means पढ़ेंगे, that विद्या which उसी को helps you माना to earn जाता है जिससे money. आप पैसे So की कमाई कर nowadays, सकते knowledge is हैं restricted और to फिर आप only अपने को that आपको field बेच which सकते हैं। helps आज you to हर एक earn व्यक्ति money, अपने को and you बेचने में can लगा हुआ है। sell yourself हर in एक the market. Today, किसी भी every तरह से person इंटरनेट is पे, busy selling इंस्टाग्राम पे, यहाँ himself or पे, वहाँ herself पे on the market with सब on social कि media. मैं बिक जाऊं और मेरे को पैसा Everyone is मिलेगा, लेकिन trying to पैसे से sell करेंगे क्या फिर आप? himself or herself. But what will you पैसे do से आप with सुख the चाहते हैं ना, money that you earn? लेकिन You अशांत want सुखता सुखम। happiness from the money. भगवान कहते हैं कि जब But अगर आपका मन अशांत unless है if your mind तो आप is सुख प्राप्त disturbed, नहीं कर सकते। how can you be और happy? मन You अशांत cannot get तभी तक रहेगा happiness. जब तक आपका And चित्त mind दूषित है। will remain तो disturbed उसके as लिए long as your आपको chitta भाषा आनी is चाहिए, polluted, मंत्र it is का impure. So you उच्चारण should कैसे किया know जाए, language, तो ये सब आपको how to सीखना recite पड़ेगा। mantras. You तो have to learn all this. जैसा अभी बताया गया कि लोगों So, की as it व्याकरण was में वैसी said रुचि here, नहीं होती है, that people पानी नहीं generally चले do जाओ तो not आह have जटितम interest in जटितम Vyakaran. जटितम दृष्ट्वा शब्दानुशासन स्तोमम, वो बहुत जटिल है। So, Panini Vyakaran is highly complicated. शिव जी के डमरू से निकला ना, उसको पहले जो 14 उसके It appeared माहेश्वर from the सूत्र हैं, Damaru of उनको Bhagavan पढ़ के Shiva, आपकी बुद्धि the 14 बन जाएगी, लेकिन वो Maheshwar बहुत वैज्ञानिक है। Sutras. If you study
study that, वो भी चित्त शुद्धि you'll find it so amazing. आज
मन लोगों That का is इतना also चंचल very हो so गया, हर एक scientific. आदमी के हाथ में ये It purifies your स्टीव chitta. जॉब्स ने दे दिया है, But वो nowadays people are so इन्हीं disturbed, की and देन Steve है। Jobs has made a contribution of giving a तो ये इसी से smartphone in चल everyone's रहे हैं hand. लोग, So people are लेकिन उससे busy with आपको शांति smartphone और सुख only. नहीं मिलने वाला। But that is तो not इसलिए जीव going गोस्वामी जी ने to एक बहुत give बड़ा you काम peace किया, and तो happiness. हरिनामामृत So व्याकरण Sri बनाया Jiva उन्होंने, Goswami has और made an उसको भी immense उन्होंने बनाया contribution भगवान की उपासना of के लिए, giving जिसको हम Harinamamrit वाचिक मानस Vyakaranam, and he did नामावली that for worshipping Krishna. तत्साहित्यादि जामोदम। तो जो आमोद आप चाहते हैं, जिसकी हम बात So कर the रहे हैं, happiness that you यही want, बात उन्होंने what we are प्रीति संदर्भ में discussing की। in Preeti अंत में Sandarbha जाके also, जब he has सत्संग discussed संदर्भों में that से only. अंतिम जो प्रीति संदर्भ है, उसमें सबसे पहले In the last of the उन्होंने 6 ये Sandarbhas, the विश्लेषण किया Preeti कि आदमी Sandarbha, there चाहता he क्या है। has analyzed this only, कोई भी that व्यक्ति, what does any human आप being चाहे want, स्त्री हैं, चाहे any पुरुष हैं, person, युवा whether you हैं, are a वृद्ध man, हैं, woman, स्वस्थ young, हैं, बीमार हैं, old, भारतीय हैं, विदेशी हैं, जो healthy, भी हैं, आप diseased, वास्तव Indian, में foreigner, सुख चाहते whatever. हैं। और Ultimately, फिर what you सुख का want उन्होंने is बहुत बड़ा happiness. विश्लेषण किया, And then तैत्तिरीय he has स्वामी done जी अमृत उठा के an बताया, elaborate और फिर analysis बताया कि of वास्तविक सुख happiness, जो है वो आपको केवल भक्ति से ही quoting मिल from सकता है। Upanishads. And then और he भक्ति has जानने के लिए आपको शास्त्र पढ़ना concluded पड़ेगा, that क्योंकि for getting भक्ति जो है ना, वो happiness you need to गुणातीत do वस्तु है, वो bhakti, जल्दी से and समझ in में order नहीं to आती। learn bhakti, आजकल and in भक्ति order का to बहुत do ज्यादा bhakti, प्रचार first है, of all you have to लेकिन learn बहुत it from ज्यादा भ्रांति shastra, भी इसी because के बारे bhakti में is है। beyond the gunas. सबसे ज्यादा Nowadays there भ्रांति is a भक्ति lot के of बारे में preaching फैली of हुई है। bhakti, and लोग, nowadays there is जिनको कुछ भी maximum नहीं आता, वो केवल एक मजबूरी confusion के लिए about पूजा करते bhakti. हैं। Those who do उससे not know नीचे कोई anything of चलता ही नहीं है। shastra, they also talk about manjari swarup. मतलब Nobody तुमको is talking about ABCD anything नहीं less आता than भक्ति manjari का, swarup. Meaning, you do लेकिन not बात know आप मंजरी ABCD स्वरूप of की bhakti, करेंगे। but you are तो ये discussing ऐसा क्यों about हुआ है? manjari क्योंकि इसका swarup. इतना प्रचार कर So दिया why it गया। has happened? तो That is प्रचार अच्छा because है, so much preaching लेकिन has प्रचार happened के साथ about में आचार bhakti. बहुत So जरूरी है। preaching is nice, but along अगर with आचार नहीं preaching, है, the प्रचार से sadachar, आपका आचार proper बन जाएगा behavior is also extremely essential. और कुछ नहीं होगा। Otherwise, you will make a mess out of your तो आज यही preaching, हो गया, आचार nothing मतलब else. जो थोड़ा So स्वाद nowadays, मिलता है this is खाने what में, is happening. लेकिन उससे कुछ पोषण You शरीर का just नहीं get होता some है। taste out of अगर preaching, आप भोजन but करें और it is केवल not अचार ही खाएं, nourishing your health. तो उससे आपका शरीर थोड़ा ही पुष्ट होगा। If you don't eat तो food शरीर and पोषण just के eat लिए तो achar, आपको दाल you रोटी will सब्जी ये or सब खाना pickles, पड़ेगा। you will not तो ये get जब तक nourishment. आचार So नहीं for होगा, nourishment, you आचार have to पूर्वो eat धर्म proper food. विद्या आचरति श्रेष्ठ। That's why भगवान स्वयं without कहते हैं कि अगर मैं acharan, नहीं without करूंगा sadachar, तो वेद without भी नहीं proper होगा, behavior, even तो सब Bhagavan नष्ट himself हो जाएगा। says वो that स्वयं अपना if आचरण I do करके not दिखाते हैं। behave और properly, भगवान यहाँ practice धर्म की sadachar, स्थापना करने के लिए everything आते will हैं। be और धर्म की finished. So स्थापना का Bhagavan मतलब क्या appears है? to establish dharma. What does मतलब it वो mean to ज्ञान स्वरूप है। establish dharma? Meaning, जैसे हमारा जो he सरकार है, सरकार में अलग अलग gives विभाग हैं, knowledge होम before मिनिस्ट्री है, leaving. फॉरेन मिनिस्ट्री है, Like तो एक in एजुकेशन government we have डिपार्टमेंट है। different ministries, तो so there is a एजुकेशन ministry डिपार्टमेंट of जो है भगवान के अपने education पास में also. रखते हैं उसको, So this education तो department किसी is को देते always नहीं with है। Bhagavan himself. He does not इसलिए जितनी भी संप्रदाय आप देखेंगे, outsource चाहे it to श्री anybody. संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, सब वहीं से That's why चलती है। if you see Sri Sampradaya, संप्रदाय की Madhva आवश्यकता Sampradaya, क्यों all the पड़ती है? Sampradayas, they begin क्योंकि from इसका Bhagavan डिपार्टमेंट only. वहां से Why चालू do you होता है। need Sampradaya? Because this department ऐसा क्यों है? begins from क्योंकि him ये only. Why? लोकातीत वस्तु है Because जो this देना चाहते spiritual हैं, knowledge और is लोकातीत होने beyond से this लोक के world. व्यक्ति तो इसको जान नहीं सकते हैं, And that is तो why the उनको people स्वयं of this बताना world पड़ता है। cannot know this. और इसलिए That's वो why स्वयं Bhagavan अवतार धारण himself करते has हैं, to स्वयं give ही this भक्त रूप knowledge. में That's आते हैं। why he himself अगर वो appears as स्वयं भक्त रूप avataras में ना आए तो or हम किसका even पता as चलेगा? a bhakta. तो If वो he does अवतार not धारण appear इसलिए as a करते हैं ताकि devotee, how हमको do we सिखा सकें understand what यदि is a आचरति devotee? श्रेष्ठ, So श्रेष्ठ he कैसे takes the आचरण form of करते हैं। devotee हमारे also गोस्वामी गणों ने to जैसा teach by आचरण his किया, own example, by his own तो यहाँ behavior, भी नाना like शास्त्र how विचार, our Goswamis नाना behaved. शास्त्र अर्थ विचार What वही was सब their लिखे हैं। acharan? तो इसमें नैपुण्य है। So they were भक्ति रसामृत सिंधु expert में जब वो in बात करते shastras, हैं in अधिकारी proper की, behavior. तो सबसे In पहले Bhakti ये लिखते हैं Rasamrita युक्त Sindhu, शास्त्र when Sri Rupa शास्त्र Goswami युक्त talks about निपुण। the Uttama Adhikari, then सबसे पहले he शास्त्र में says the निपुणता Uttama चाहिए, Adhikari नहीं means तो he भक्ति में has to आपका be अधिकार नहीं expert है। in Shastra. Otherwise, you do यदि not have श्रद्धा any आएगी नहीं adhikar, eligibility for bhakti, और नहीं तो because आप the एक Shraddha वास्तविक has to come चरण से from चलते Shastra रहेंगे, only. तो Otherwise, ठीक है, you अच्छा just है, लेकिन follow अगर आप something वास्तव according में to the social भक्ति का custom रस लेना in the चाहते हैं name of bhakti. तो But if इसके you लिए actually शास्त्र want आवश्यक है, और bhakti शास्त्र में सबसे rasa, पहले व्याकरण then आवश्यक है, Shastra is पदवाक्य essential, and प्रमाण। for
learning Shastra, first of all, you have to learn Vyakaran, Pada, Praman, and Vakya. You should know at least these three, but at least you should learn Vyakaran. व्याकरण पढ़ के क्या होगा? But nowadays people say that what is the use of learning Vyakaran? You should teach us Ujjwal Neelmani. First of all, nowadays people want to learn Govinda Lilamrit.
what will you get hold? What will you learn from that? You will just follow your own samskaras. Whatever we experience according to our own samskaras. If you do not have a samskara of something, you cannot experience that. You cannot taste that. If you like rice, you will not like roti, and if you like roti, you will not like rice. So you'll be upset if only rice is served to you. So if I do not have samskara of something, I will not have interest in that. So we do not have samskaras of bhakti. All our samskaras are material. So we have to get rid of those material samskaras and get the samskara which is beyond this world. And for that, Shastra is essential. And unless we get the Laukik samskara from Shastra, then bhakti is just, we will not get bhakti. That's why Sri Rupa Goswami says bhakti is sudurlabha. It is extremely rare. So our Goswamis, like they have given Bhakti Rasamrit Sindhu, Madhurya Kadambini, Sandarbhas, the deliberation that they have done on bhakti, such deliberation is not available, such analysis is not available in any other sampradaya. I have studied Shastras from all sampradayas and I am still studying them, but I do not find any such explanation or analysis of bhakti in their books like we find in our Goswami books. They say that without varnashram you cannot do bhakti. You can do prapatti, but not bhakti. To do bhakti you must be in varnashram. But our Goswamis have not told all that. It is not there even in Srimad Bhagavatam. One, for one on whose tongue there is name of Bhagavan, even if he is a dog eater, he is considered to be the best. He has completed all tapasyas, tirthas, etc. So people keep repeating this, but it is not easily understood. What is its deep meaning? In order to understand that, we have to study Shastras deeply. Imagine how hard our Goswamis must have worked. We are sitting here peacefully within this building, but during the Goswami's time there was nothing of all this. Writing books. The other acharyas, they were in some proper place, whether Sri Rangam or some other place, but our Goswamis were in this forest here in Vrindavan. There was no facility even for food or anything, only cold climate, cold wave from Yamuna. Imagine when you have summer in Vrindavan, during rainy season, how many mosquitoes are there? Now you can have mosquito net or you can sit in AC. Imagine how they could have slept with so many mosquitoes, no electricity, no fan, and then sitting and writing books. And writing books does not mean just from here or there. You have to do so much deep analysis from where they collected so many books, getting books of other acharyas from different places in South India. It is not like what we do. We go to Loi Bazaar and purchase some book from Rasbihari Lal. So all these were not available that time. So collecting so many books, this itself is an effort that will take entire life. And then studying them and collecting the essence of the entire knowledge. So we should be so much grateful to the Goswamis. We say that we are Rupanugas, but we do not study the books of Sri Rupa Goswami. People say that I am Rupanuga. But then the question is, have you studied any book of Sri Rupa Goswami? Then what type of Rupanuga are you? When you have not studied any of his literature, then how can you call yourself his Anuga, his follower? In order to be somebody's follower, you have to learn what is in his heart. And that is only possible through his books. So we have to study their books very deeply. That's why we are very grateful to Sri Jiva Goswami Prabhupada that he has given books on Kavya, Darshana, Vyakaran. He has expertise in everything. There is no topic on which he has not written, and what he has written is super excellent.
It is unique. इतना बड़ा चंपू I have seen other champus also, but nobody has written a champu as big as Gopal Champu. And then so much analysis of Bhagwan's Leelas in Gopal Champu. So all his literature is unique. It is super excellent. His glory is wonderful. So we pray to him that we also get a drop of mercy from him, and we can also fit something in our dull intelligence. This is our prayer to him. I'm thankful to all of you who are studying their books. This is my pleasure and success of life.